news coming in from Rajasthan. Politics has started over Kanwar Yatra and the administration's suggestion of a route change for Kanwar Yatra, which has been rejected by the organizers. What exactly happened here? What we know is that BJP is alleging that the state government in Rajasthan is intentionally changing the route of Kanwariyas in order to appease the community. In fact, allegations have been made that this objection was raised by those associated with Popular Front of India. What really is the backstory? Bhavani Devra is with me on the phone line. Bhavani, ये जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, आखिर इसमें पुलिस का क्या कहना है? क्यों कांवड़ियों का रूट बदला गया? देखिए, ये जो टोंक के अंदर कांवड़ यात्रा निकलती है वो लगातार हर बार इसी रूट से निकलती है। जो विवाद इस बात को लेकर था, जो कांवड़ी है उनका ये कहना था कि जिस रूट से निकाली जा रही थी वो जो हाईवे का रूट था और कुछ शहर का रूट था जिससे जाती है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू हो सकते हैं, इसलिए एक नया रूट दे दिया गया। तो तब उन्होंने कहा कि हम नए रूट से नहीं निकालेंगे और जो रूट हम हमेशा निकालते आ रहे थे, जिस रूट से इतने सालों से और आस्था से जुड़ा हुआ रूट की एक अपनी अहमियत होती है, क्योंकि जिस इलाके से जाते हैं लोग उससे शरीक होते हैं। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि आप अगर पुराने रूट से हमें निकालने देते तो ठीक है, नहीं निकालने देंगे तो आप जो रूट हमारे लिए तय कर रहे हैं हम उससे नहीं निकालेंगे। वो एक सिंबॉलिक हो गया। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से पूरे शहर से बाहर कर रहा है, जो रूट था वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इस पे ऑब्जेक्शन किया। इस पे उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे तो नहीं निकालेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी। और इस बीच में वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया। पुलिस की सुरक्षा आज भी है, लेकिन कांवड़ यात्रा नहीं निकल रही है। जी Bhavani, bane rahiyega. What Bhavani is saying is that this decision was taken by the administration. They gave the reasoning that there is communal tension in this area and therefore the route for Kanwar Yatra should be changed. Shahzad Poonawala, the Bharatiya Janata Party spokesperson, is with me on the broadcast. Shahzad, I just reiterated what the administration is saying, repeated it in fact. Sounds viable to avoid communal tension. The local law and order has to be maintained, so the local police decides that let's take the Kanwar Yatra from another route. You know, PFI gets a free run to remove marches in Kota, but 144 is applied when Kashmir Files is released. You have a situation where Hindu Riti Rivaj and all the marches they have to take out are imposed with certain kind of restrictions, but the other sides are given free run. Now in this case, if the administration wanted, they could have provided adequate security and allowed the traditional route for the Kanwar Yatra to continue, but instead they changed the route in this case. But this is the same administration which gives a free run to PFI. So this discrimination has been going along for a long time. You remember the electricity order where they said Rozedars during Ramzan would have uninterrupted supply of electricity, but no such order was made at that time for the Navratra which was going on. This is the one-sided secularism or one-eyed, cockeyed secularism of Ashok Gehlot government. Because of this, the riots took place in Karoli. The main accused is still absconding. Riots took place in Chhabra. The main accused was seen in an iftar party with Ashok Gehlot. Riots took place in Jodhpur. Riots took place in Jhalawar, Bhilwara, and then we also saw the execution, ISIS-style execution of Kanhaiya Lal, who was not even given a police protection. So this is the one-eyed, cockeyed secularism of Ashok Gehlot in the name of vote bank politics. This is absolutely discriminatory towards the Hindu community. Why is it that one community always has to face the wrath of the Gehlot government, whereas the other side, including the likes of radical groups like PFI, get a free run? So, I mean, you repeatedly mentioning PFI, Shahzad. Can you elaborate a little? What is the information that you have about PFI's specific role which led the administration to call off the traditional Kanwar route? No, I am saying that in the past, when the PFI wanted to remove a march, a hijab day march in Kota, they were given all the protection and the administration cooperated and gave them a free run to remove the march. But when Hindus want to take out their Kanwar Yatra from a traditional route in Tonk, and this apparently happens to be the same area where we've seen an exodus of Hindu families, the administration is saying that we will not be able to provide you security to take an alternative route. That means the radicals have such a free run in Rajasthan that the administration is telling the Hindus who have a traditional route to change their route, but they can't tell the people who are radical elements that we will ensure security, and why should the Hindus suffer? Why should the Kanwar Yatra suffer? So this kind of administration attitude shows the vote bank politics and their niti of appeasement.
Right. Shahzad Poonawalla, thank you so much for joining us. BJP there making a charge that the Ashok Gehlot government is failing to provide security that is required. If the administration thought that there was a law and order issue, there was communal tension, Shahzad Poonawalla arguing that then they should have provided adequate security instead of forcing the Kanwariyas to take a different route, a route different from the traditional route. And Bhavani Deora, my colleague, in fact, was saying that the alternate route that was offered was completely off the main area where devotees live. It was almost off the main township completely, and that is why the organizers cancelled it. Now, Bhavani is also sending us the information that flag marches have been carried out in this area. Senior district officials, senior police officials are all at the Malpura area of Tonk. So their assessment is that this Kanwar Yatra and cancellation of it by the organizer has led to some tension. If I can get Bhavani back into the conversation, I will get him in a bit, but Rajendra Khurana, the Bharatiya Janata Party district president, has also spoken. Let's listen in and then I'll go back to Bhavani. ये जो राजस्थान में तुष्टीकरण की सरकार है, उसके द्वारा किए गए ये कृत्य तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। स्टेट हाईवे से जो कोई यात्रा बरसों से निकलती थी, उसका मार्ग बदल दिया गया। जब मालपुरा की धर्म प्रेमी जनता ने आग्रह किया तो उसे स्वीकार नहीं किया गया और विरोध प्रकट करते हुए मालपुरा की जनता ने और कावड़ यात्रा समिति ने वो कार्यक्रम ही निरस्त कर दिया और इसकी लिखित सूचना प्रशासन को दी है। मैं समझता हूं इस राजस्थान सरकार के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। सरकार की मंशा है हिंदू समाज के मान बिंदुओं को दबाना, बहुसंख्यक समाज को दबाना और तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग विशेष को राजी करना। मैं समझता हूं सब लोग, प्रशासन के सारे अंग राज्य सरकार के उसी कृत्य का सहयोग कर रहे हैं। So Bharatiya Janata Party is taking strong objection to this decision by the administration. But what's happening on the ground? What is happening on the ground is that the administration feels there is tension, there is possibility of law and order deteriorating. So all the top officials from the district administration, be it the collector, be it the top police brass, they are parked at Malpura area of Tonk. There is also, flag march that has been carried out by the police, and we are told that there is a possibility of internet getting also restricted in that area. So these are steps that have already been taken. Swapnil Chaturvedi of the Congress Party is with me. Swapnil ji, this objection by the BJP, जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप अपीजमेंट करते हैं, जब किसी एक समुदाय का त्योहार होता है या उनका कोई मार्च होता है तो आप पूरी व्यवस्था करते हैं उनके लिए, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए आप हर बार रोड़े अटकाते हैं, अड़ंगे पैदा करते हैं, जैसे इस बार किया है। ये आरोप है आप पर बीजेपी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कावड़ यात्रा पूरे राजस्थान में निकल रही है। कावड़ यात्रा निकलने पे इन्होंने एक अफवाह फैलाई है कि कावड़ यात्रा निकलने से प्रशासन रोकता है या सरकार ने रोक लगा रखी है, जबकि ये गलत है। हमारे तो मिनिस्टर्स उस पर काम कर रहे हैं। हमारा देवस्थान विभाग है, उसने ऑर्डर्स दिए। जितने भी देवस्थान विभाग के अंडर में मंदिर हैं, उन मंदिरों में इस वक्त जो अभिषेक होता है सावन के महीने में शिव जी का, वो करवाया जा रहा है सरकार द्वारा। तो ये सब गलत की चीजें हैं। हाँ, इतना तय है कि अगर कावड़ यात्रा या कोई भी यात्रा या कोई भी मार्च अगर किसी भी कम्युनिटी को निकालना है, अगर उसको डीजे बजाते हुए निकालना है या बैंड बाजा इस तरह से सार्वजनिक स्थान पे बजाना है और निकालना है, रास्ता रोक करके टेंट लगाना है, तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति की जरूरत होती है। बाकी किसी चीज के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस वक्त पोलराइजेशन की राजनीति यहाँ पे करती है, तो ये अफवाह फैलाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अफवाहें फैला रहे हैं राजस्थान में, और इस अफवाहों का जवाब देने के लिए हमारे राजस्थान के 3 मिनिस्टर्स ने कावड़ यात्रा निकाल करके दिखाई है, खुद यहाँ पे कर रहे हैं कि अब यहाँ पे कोई रोक नहीं है राजस्थान में।